अच्छा जी, ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। Figure 2.1 shows a man pushing a heavy box with force P. अच्छा, this is question 8 of worksheet, but in exam papers it's GCSE June 18, 5054 June 18 and this paper 2-1। अच्छा जी, अब हम करते हैं जी ये स्टार्ट। shows a man pushing a heavy box with a force P, a frictional force F acts in a horizontal direction. The forces on the box are balanced and the box is stationary. State what is meant by balanced forces. वो कह रहा है कि what do you think about balanced forces? Balanced forces means there is no resultant force and hence no acceleration. So when the forces are balanced, there is no resultant force and no acceleration at all. So speed या direction जो है वो change नहीं होगी। अच्छा, next part. The frictional force in figure 2.1 does not produce any heating effect. State what must happen for the frictional force to produce heating. Frictional force will produce heating if the box is moving. So whenever motion takes place, then the frictional force will generate heating effect. So basically work should be done, or work तभी होता है when the box is moving, when the object is moving. So we can say that since the object is not moving। अच्छा, उसने पूछा है कि व्हाट शुड हैपन फॉर द फ्रिक्शनल फोर्स टू जनरेट हीट। तो हमें ये लिखना है कि व्हाट शुड हैपन। सो द ऑब्जेक्ट मस्ट मूव फॉर द जनरेशन ऑफ हीट। बेटा हीट तब जनरेट होगी अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तभी वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं हो सकता। ठीक, अब आ गए आगे। Apart from being stationary, describe one other possible state of motion of the box when the forces are balanced. So, when the forces are balanced, then speed or direction cannot change. So, we can say that the speed and the direction of motion will not change. So, basically, it will be moving with constant speed in straight line. So, you can say that it will be moving in straight line with constant speed. So when the box will move in straight line with constant speed, then the forces will be balanced. ये एक और स्टेट हो सकती है। When P is 100 and F is 85, the box accelerates because now the forces are unbalanced. Since P and F are not equal, so we will have a resultant force. Mass of the box is 85 kg. Calculate the acceleration of the box. Now in this case, P is the forward force and F is the backward force. So we can say that F is equal to ma. In this equation, F is the resultant force. F is the resultant force, m is the mass, and a is the acceleration. अब अगर हम इसमें a को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू एफ ओवर एम, और f जो है वो रिजल्टेंट फोर्स है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, और डिवाइड हो जाएगा मैस पे। तो फॉरवर्ड फोर्स हो जाएगी 100 न्यूटन, बैकवर्ड फोर्स हो जाएगी 85 न्यूटन, और डिवाइड हो जाएगा मैस पे जो है 25 kg।
तो ये बन जाएगा हमारे पास 15/25, तो 3/5 0.6, तो ये हो जाएगा 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सलेशन आ गया 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है जी इसका आंसर।